Everything else in the world, how things are becoming smaller and smaller, whether it's our laptop or our mobile or cars, whole world knows it. The future of cinema is internet movies. Because 2 hours, 2.5 hour film is not the future. The future is online, and the sooner we realize that, sooner we catch up, we won't be lagging behind from the rest of the world. I think Americans have already, in a very seamless way, adapted to this, and I'm so happy that I am getting to launch one very, made on a big scale film, which is being released on the internet. I was very liberated while making this. Relieved I was not thinking about box office numbers, not thinking about censor or any of those things. We could have just made whatever we wanted. And one of the best things about short films, what I feel, is in feature films, we think of something right, and by the time we make it, it's a couple of years. By the time it releases, we are a completely different person. Here you think of something, you make it out, it's out in 2-3 months. It's very relevant. So I think that's the reason I love this format. I always, felt that internet is becoming wider and bigger and bigger and bigger and better and better. And this is the medium that one should really explore and experiment with. And I wanted to get used to it. Somewhere, movies.com, that's how we all started, and with this thought, we all started on this portal. And also it gives so much of freedom and liberty to just go ahead and experiment with yourself, just challenge yourself. Do the kind of roles that you will never get to play in a feature film. So just the greed of doing roles, greed of doing various stuff is something keeps on forcing actors like me, just you go ahead and try it out. ये बंदा जो है थोड़ा सा, इसको मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता, माइंड डैश 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 उस टाइप का आदमी है जो अपनी चीजें बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है, बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है. इसमें परफॉर्मेंस जो है कई तरीके से हो सकती थी, बट टू डू मिनिमम एंड टू जस्ट दैट was the biggest challenge for me. ये हर एक्टर जिसको भी दोगे वो अच्छा करेगा, because as I said, it can be done in thousand ways, and I try to keep it as minimum as possible, because जो हो रहा है उसके दिमाग में ज्यादातर हो रहा है, उसकी आंखों में हो रहा है, बाकी उसकी बदन में इन सब चीजों में नहीं हो रहा है. तो it was an experiment in of sorts. I just hope that people get the performance. जब उन्होंने मुझे बोला कि ये कृति करके एक फिल्म बना रहे हैं, तो आई वाज लाइक या, एंड देन व्हेन ही सेड मनोज इज इन इट, मैंने अलीगढ़ देखने के बाद आई वाज लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर मनोज बाजपेयी. तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा. उनकी कहानी इतनी खूबसूरत थी, कृति. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड देन पावर हाउस परफॉर्मर्स लाइक राधिका एंड मनोज सर, आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. बस आई जंप्ड एट इट. तैयारियां तो करनी पड़ती हैं. आपने फिल्म देखी होगी, जब स्क्रिप्ट पढ़ता है आदमी तो लगातार उस पर काम करता रहता है. और मेरे पास समय बहुत है क्योंकि आजकल मैं काम नहीं कर रहा हूँ. पहले तो थोड़ी पढ़ाई की, बिकॉज मुझे एग्रोफोबिया का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. व्हेन ही टोल्ड मी इट वाज टोटली एलियन फॉर मी, सो आई डिड रीड अ लॉट अबाउट इट. शिरीष ने सजेस्ट किया कि अपने आप को कुछ दिन कमरे में बंद कर लो एंड फील हाउ इट फील्स टू बी अ पेशेंट, समवन हु सफरिंग फ्रॉम एग्रोफोबिया. तो आई डिड दैट, एंड ऑफ कोर्स एक दो रीडिंग्स की विद मनोज एंड शिरीष टुगेदर. सो दे वर वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल, मेरी बहुत मदद की. तो मैंने जितना हो सका उतनी मेहनत की है. नेहा तो बहुत कमाल की टैलेंट है, बहुत ही कमाल की टैलेंट है. और राधिका के बारे में सभी जानते हैं कि वो हर बार जो है लोगों को सरप्राइज़ कर रही हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब अच्छे टैलेंट आपके साथ होते हैं तो
आप हमेशा सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, आप कहीं भी कोई भी मोमेंट फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं।